Trisha Shetty, I want to get you in. With what happened in court today, the sheer fact that these women have tried desperately to even lodge an FIR. One of them is a minor. She's 16-year-old. The committee report is constantly being referred to, where sources are insisting, because the committee report is not out in the open. The Delhi police says we are looking at the committee report even before filing an FIR. In this scenario, there needs to be some support system. And usually, traditionally, one would have hoped that the country's top women body would have come to provide that. You are exactly right. We do have an established support system, which is the law, right? So it is extremely troubling that when we claim to be living in the motherland of democracy, our top elite level wrestlers have to move to the highest judicial body, which is the Supreme Court, simply to demand for the registration of an FIR. Failure to register an FIR when a public servant, a police officer, is made cognizant of criminal offences, which sexual harassment very much falls within the purview of, falls under section 154 of the CRPC. Failure to register an FIR is a direct violation of the law. Again, section 166A of the IPC lists the punishment for a public servant who refuses to file an FIR. So here the law that is supposed to protect women has failed them. Here again, when you talk about a minor, this should have directly been slapped as a case under the POCSO. POCSO, the burden of proof is on the accused. Again, who is the accused here, right? This is an accused with clear links to the largest political party that we have in power right now, which obviously makes a difference. Is also a standing member of parliament, and politically has an established criminal record lodged, filed against him. And why am I mentioning this? Because when you file a police complaint against someone, the police officers look, does this person, does the accused have a history of criminal behavior? And we must elucidate what is the criminal behavior this person has been accused of. Attempt to murder, dacoity, critically disappearance of criminal evidence. This is one of the charges filed against this accused, right? Under all these, with all these facts on record, we see a complete abomination of responsibility of law and order, where even a minor's right is not being protected. And again, this person, Mr. Brij Bhushan, has also on video slapped an athlete in 2021. So we've seen also an established record of how a person who's supposed to be in charge of protecting Trisha, I'm going to come right back to you. The reason I'm just, coming and interrupting is I want to cut across back to Vinesh Fogart. She's been in touch with the NCW, because you're right. At a level, the entire system, which they say they have no faith in, and it shows that why they have no faith in, because they can't even register an FIR when there's a minor involved in the incident, and they need to go to the top court of the country. One would hope that the woman's body would be their support system, would come up, step up. It's abysmal, because I want to take you through Rekha Sharma, the NCW chief's timeline, even on Twitter, because that would possibly be her medium to communicate that she cares for these women wrestlers who feel they are being pushed into a corner by who they feel are powerful, and they've alleged sexual abuse. Her timeline of Twitter is bizarre. One just needs to look at it. But away from all of that, I want to go back to now Jantar Mantar. Amit Bhardwaj is with me. He has Vinesh with him. Amit, will you ask Vinesh, what is the conversation with NCW? Why is it that NCW has not come in and stepped in, at least taken any action till now? All right, Preeti. Sakshi Malik told us that it is Vinesh Fogart who has been speaking to the National Commission for Women. Vinesh, आपकी साक्षी मलिक ने हमें बताया कि आप लगातार नेशनल कमीशन विमेन से बातचीत कर रही थी इस मसले को लेके, तो वहां से क्या बातचीत हुई और क्या कुछ एश्योरेंस मिला था आपको, ये बताएं। देखिए, परसों रेखा मैम से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि मैं बात करती हूँ दिल्ली पुलिस से कि क्या इस मामले में चल रहा है, और उसके बाद हमने एक ईमेल भी डाला है उनको, और एक्चुअल में आज भी हमने एक ईमेल डाला है। तो उनको ये ईमेल डाला था कि प्लीज उनसे पूछे कि वो FIR क्यों नहीं कर रहे हैं हमारी, लेकिन उन पर उन्होंने एक ईमेल का रिप्लाई तो किया है कि हाँ, हम पूछ रहे हैं और आपको बताते हैं जैसे भी होगा। उन्होंने अपने संज्ञान में लिया तो है ये सब चीजें, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। जवाब सिर्फ आया है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक आप लोगों को
होता वो नहीं हाँ दिख जी, रहा। ईमेल का रिप्लाई तो आया है, बट कोई ऐसा स्टेप तो अगर हो जाएगा तो सीधी FIR ही हो जाएगी। और दूसरा, आज मैंने एक और ईमेल डलवाया है कि लड़कियों की आइडेंटिटी जो है वो लीक कर दी गई है पुलिस की साइड से, और उनको धमकी कॉल्स आ रहे हैं और पैसे देने के उसके ऊपर भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि साम दाम दंड भेद करके कैसे भी लड़कियों को दबाया जाए, तो वो कोशिश हो रही है। तो उसके लिए भी हमने उनको डाला है कि ऐसे ये आप एक बड़ा आरोप लगा रही हैं कि आइडेंटिटी रिवील की गई है, ये क्या, किस पे शक है, कहाँ से लीक हुआ ये फिर? देखिए, या तो हमारी साइड से या पुलिस की साइड से है, तो हम तो अपनी आइडेंटिटी लीक थोड़ी करेंगे लड़कियों की। पुलिस की साइड से लीक हुआ है, और तो थर्ड पर्सन को किसी को पता ही नहीं है कहाँ से क्या हुआ है। और ब्रज भूषण को पता है एक्चुअल में, तो उसके लोग लगे हुए हैं तोड़ने को, और हमारे पास विद प्रूफ है। लड़कियों के पासपोर्ट है या आधार कार्ड की फोटो है, वो शेयर करके कि इसको, लड़की को ढूंढो कहाँ से है, क्या कौन सी फैमिली से है, किधर रहती है, तो इसको पूरा उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सो वो भी हमने एक ईमेल किया है, लेकिन उसका भी वही कि संज्ञान में ले लिया है मामला, ऐसे करके उनका रिप्लाई तो आया है। बट क्या ऑडियो क्लिप्स वगैरह भी हैं इस तरह की धमकी भरे कॉल्स के जो आप, जिसका जिक्र आप कर रही हैं? नहीं, ऑडियो कॉल्स नहीं है, लेकिन वही फोन करके दूसरे लोगों को कि देखो इसको वो करो, और मैसेज में कि कैसे भी तरीके से इनको मैनेज करो। तो मैनेज करने का मतलब क्या होता है, किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? अवनीश, एक और सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली कमीशन वुमेन ने नोटिस इशू किया, लेकिन NCW की तरफ से उस तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसकी उम्मीद आप लोगों को है? देखिए, बिल्कुल हमने उनको इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन वो अगर लेट हैं तो दिल्ली पुलिस अगर लेट है तो वो भी लेट है, तो हम तभी तो हम सुप्रीम तो कोर्ट में सभी गए लेट हैं। हैं। अप्रिशिएट अगर यू संज्ञान जॉइनिंग अस ले ले अमित।